Assalamu alaikum to all of you. I hope you are all fine and good. Welcome to you all in today's lesson. So today I just want to discuss about the how we can draw angles with using protractor. Okay. And this is a video is very short. I just want to say कि आप अगर इसको few minutes देखेंगे आपको इसके बारे में clear concept हो जाएगा. So now we have to start. First of all, you can see here, I tell you about the protractor. You can see the protractor on your screen, a tool that is used to measure angles. So if we talk about the protractor, three main things about protractor you can see here. The first one is about the, I will start from the center. You can see the small circle here, okay? This small circle is known as a center. This is the center point of the protractor, okay? So the next thing is you can see 0, 10, 20, 30, 40, 10 gap, or you can see the table of 10, or you can see the table of again table 10 start from this. So you can see this line, okay, this is the inner scale, and this line, this is the outer scale, ठीक है. तो जो आपके पास 9 ये आ रहा है 1 0 10 20 30 40 50 60 70 80, these are the inner scale. और ये जो आपके पास 100 110 सॉरी 80 70 60 आ रहा है, ऊपर की लाइन आ रही है, दिस इज द आउटर स्केल. एंड यू कैन सी हियर 90 is the right angle, ठीक है, this is the right angle, you can see the right angle on the screen, ठीक है. So this is all about the protector. So now we have to discuss how we can find out the angle. So here is the example. Draw an angle DEF with a measure of 65 degrees. Okay, DEF. You have to give the name of the angle DEF. So first thing that I want to tell you people, you can see DEF. So it means D and F are the arms or side of the angles and E is the vertex. ठीक है, मीन्स E पर हमारे पास क्या होगा, एंगल ड्रॉ होगा, और डी एफ उसकी साइड्स या हमारे पास आर्म्स आ जाएंगी. ओके, so how we can draw the angle, you can see to draw an angle start with one arm of the angle. Start with one arm of the angle कैसे, first of all you draw the one arm of the angle, and if we talk about side or arm definition, that have a starting point but no ending point. So this is a starting point, you can see, you can draw the small dot here like this. यहाँ पे भी मैंने लेजर से पॉइंट आउट किया, एक स्मॉल डॉट आप ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है, for your convenience. The second thing, you have to give the name, that is EF. Why we give the name EF? Why we don't even give the name DF? Because E is our vertex, तो यहाँ पे हमारे एंगल ड्रॉ होना है, तो यहाँ पे हम E का name. Okay, the next thing is you have to put the protector on top with the vertex. ठीक है, आपके जो vertex है इसके टॉप पे आपने सिर्फ इस प्रोटेक्टर को फिट करना है, और आपने इस तरह फिट करना है कि यू कैन सी दिस लाइन. ठीक है, दिस इज अ स्ट्रेट लाइन ना, यू कैन नो द डेफिनेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन. तो दिस इज अ स्ट्रेट लाइन, तो स्ट्रेट लाइन आपकी बिल्कुल छुप जाए इस आर्म में, आपने इसको इस तरह सेट करना है. ओके, तो व्हेन यू सेट दिस लाइन, आप उसको, इसकी लाइन बिल्कुल छुप जाएगी, आपको नजर नहीं आएगी, तो इट्स मीन कि आपका जो एंगल ड्रॉ होगा वो बिल्कुल एक्यूरेट होगा. ठीक है, अब हमने इसके ऊपर क्या किया, अपना सेट कर दिया हमने अपने प्रोटेक्टर को. ठीक है, अब हम इसको क्या करेंगे, द नेक्स्ट थिंग इज वी हैव टू मेजर द एंगल ऑफ 65 ना. तो प्लेस अ मार्क, ठीक है, आपने प्लेस करना है अ मार्क ऑन द एज ऑफ द प्रोटेक्टर. क्या इसका एज है ना, इसका टॉप एज है, तो आपने इस पे सर्च करना है. यू कैन सी हियर 60 70. तो यू कैन सी कि 60 और 70 के बीच में 65 आता है. तो आप ये देख सकते हैं, लाइक सेम लाइक स्केल, दैट इज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. तो आपको स्मॉल लाइन नजर आ रही है, जो स्मॉल में एक जरा सी बिग लाइन है, दिस शोज द 5, ये 5 का गैप शो कर रही है. तो यहाँ पे आप इसको एक लाइन, जो देखिए यहाँ पे मैंने एक लाइन से इसको मार्क कर दिया, दिस इज अ पर्पल लाइन, यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन. अब आपने क्या करना है, यू हैव टू ड्रॉ द लाइन. आपने क्या करना है, रिमूव कर देना प्रोटेक्टर को, आपने ड्रॉ करनी है आर्म और साइड. ठीक है, इधर से आपने स्टार्ट करनी है, और आपने उस पॉइंट तक जानी है. अब देखिए वो लाइन बिल्कुल जो है वो छुप गई है, वो नजर ना आए. सो दिस इज अ वे. अब हमारे पास क्या हो गया जी, दिस इज अ नेक्स्ट आर्म. ठीक है, नेक्स्ट आर्म को हमने नेम दिया डी का, और ये हमारे पास टर्न कितनी हुई है, 65 डिग्री. ठीक है,
So you can see this is the accurate way to draw the angle. Okay, in this way you can draw the angles. Okay, the next thing that we have to do, uh, uh, that is we draw an angle of RST with a measure of 123 degrees. Okay, RST means we give the name. Arms the name is R and T, and vertex name is F. So how we can draw the, first of all we can draw the line. Okay, now we are talking about the, yes, we are talking about the outer लेयर. ठीक है, outer हम जब उसकी बात करेंगे स्केल की, तो हम उसके opposite साइड पे ड्रॉ करेंगे लाइन को. Then give the name is RS. Then we put the you just say कि we put the protector on it. ठीक है, और उसके टॉप पे जब प्रोटेक्टर फिट करेंगे तो अब ये देखिए ये लाइन आपको बिल्कुल क्लियर आपको ब्लू हो रही है, नीचे वाली लाइन नजर नहीं आ रही. ठीक है, एज वी नो दैट कि यहाँ पे 23 डिग्री और 23 डिग्री क्या है हमारे पास आउटर लेयर में आ रही है. दैट्स वाई हमने इसकी जो पहली रे है वो इस तरफ ड्रॉ की है. ठीक है, हमने इसकी पहली लेयर क्या है लेफ्ट साइड पे ड्रॉ किया. इनर स्केल होगा तो राइट साइड पे ड्रॉ करेंगे, आउटर स्केल होगा तो लेफ्ट साइड पे ड्रॉ करेंगे. कीप दिस थिंग इन योर माइंड. ठीक है, नाउ वी हैव टू पुट द मार्क. ठीक है, उसका मार्क हम लोग करेंगे हम 120 और 130 के दरमियान आता है 123 मार्क कर दिया. देन यू हैव टू ड्रॉ द लाइन. After that, you have to place or label T as a R. Then you draw the angle that is 123 degree. And this is your angle RST, that is angle 123. I think this is clear to you कि how we can draw the angles. So this is all about today video. I hope you like this video. If you like this video or if you complete watching this video, then you have to go and like this video. Subscribe अगर मेरे channel को नहीं किया, you have to go and subscribe my channel and don't forget to press the bell icon. And one more thing, tell me in comment section about today video. So take care of yourself. Inshallah, we will meet again in next video. Allah Hafiz to all.